and welcome to Kashmir Now. I'm your host Lipakshi Khurana. Let's take a look at what made news this week. More than a year passed, Pakistan provides nothing, say survivors of last year's floods in Gilgit-Baltistan. Government launches 100 electric buses in Srinagar, taking a giant step towards green mobility. Roads and highways infrastructure development on a war footing in Rajouri, residents hail government's efforts. UD Foundation Day celebrated with much enthusiasm at Lal Chowk in Srinagar. And in our special section of Incredible India, we take you to witness the spectacular celebrations of National Unity Day. It has been more than a year since devastating floods in Gilgit-Baltistan raised havoc in the illegally occupied territory. The nature's fury had left thousands of residents homeless, displaced and clamoring for aid and assistance from the local administration. But to their dismay, the flood survivors have not received any kind of assistance or compensation from the proxy government of Pakistan till now. We have a report. More than a year has passed since devastating floods created a mayhem in the illegally occupied territory of Gilgit-Baltistan. Bridges collapsed, farmlands ravaged, the households were inundated, but the proxy administration of Pakistan did nothing to save and salvage the victims from nature's fury. Although the waters receded, leaving a debris of disaster, the residents were still hopeful of starting a new life with the assistance of local administration. But to their dismay, more than a year has passed, the survivors are still rummaging for a hope and little compensation from the apathetic government. जो सैलाब आया था उसमें बहुत सारा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गया था, दरख्त वगैरह गिर गए थे, फिश फार्म तबाह हो गए थे। साल हुकूमत की तरफ से हमें कुछ भी नहीं मिला है। ले दे के कुछ थोड़ा सा राशन मिला था, वो भी बिल्कुल नाकिस किस्म का। तो बाहर से इतना बड़ा वो फंड आया इमदाद के सूरत में, लेकिन सलाम मुतासरीन तक कुछ भी नहीं पहुँचा। समझ में नहीं आ रहा है कि इतना फंड कहाँ पे गया, किस पे कहाँ पे खर्च हुआ। लेकिन किसी भी मुतासर को, चाहे वो फिश फार्म हो, ज़मीन वाले हों या जिनके मकानात गिर गए, उनको कुछ भी नहीं मिला अभी तक। Residents complain the large funds and aid the illegal administration received from outside never reached the victims of floods in Gilgit-Baltistan. The locals believe the aid and funds were either taken away by the local administration or never released from Islamabad for the welfare of flood victims. Winters are coming and residents are left by the administration to shiver in harsh cold in their tents and makeshift households instead of providing them at least pakka houses. हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा खास यहाँ काम नहीं हुआ है। बाकी इस तरह है कि यहाँ लोग सर्दी का, अभी आगे सर्दी आ रही है, टेंटों में रहते हैं। इसी तरह जो दूसरी सैलाब जो छोटी मोटी सैलाबें आई इधर शहर किला में, और भी घराने जो है डिजास्टर उसमें के जिद में आए, वो भी इस वक्त मुतासिर है। बस NGOs ने जो दिया तो वो दिया, बाकी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से न होने के बराबर इस तरह काम हो रहा है। The only aid they received were from local NGOs or social groups. The residents say more than their rubbled houses, the agricultural lands they lost during floods have caused a greater misery. They say the government has taken no step to restore their agricultural fields. The farmlands in Gilgit-Baltistan are the primary sources of survival. Most of the general public is dependent on self-sustained farming
in Gilgit-Baltistan in absence of any industries or job avenues. इन लोगों के मकान से ज़्यादा खेत तबाह हो गए हैं, तो यहाँ अपनी छोटी मोटी काश्त होती है, मक्की हो या गंदम हो, अब वो सारे ज़मीन जो है सैलाब की वजह से ख़त्म है। इनके ऊपर भी कोई काम नहीं हुआ है और छोटी माल मोशी करते हैं, वहाँ से घास इनको मिलता है, चरागे है और खेत है, ये भी सारे ख़त्म है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं है। For more than 70 years, Islamabad has stripped Gilgit-Baltistan of its natural resources and caused a massive deforestation in the region. The floods and landslides are just the add-ons that aggravate the miseries residents have been facing under the illegal occupation of Pakistan for decades. Moving on, a robust and modern public transport system is a hallmark of development and growth of any state or a country. In line with the vision of making Srinagar one of the smart cities of India, the government launched a fleet of 100 electric buses in the Union Territory of Jammu and Kashmir. The e-buses will ply on 15 routes in Srinagar to connect almost every region in and around the city. The initiative is hailed as a great step towards promoting green and zero-emission mobility in Srinagar. Take a look. In a bid to boost green mobility and making public transport system much more efficient in the city of Srinagar, government has launched 100 electric buses. Manoj Sinha, the Lieutenant Governor of the Union Territory, flagged off the first fleet of 75 e-buses in Srinagar. These e-buses will ply on 15 designated routes in Srinagar, covering almost every region in and around the city. आज श्रीनगर शहर के लिए बहुत ही खुशी का मौका है। आज 75 ई बसेस श्रीनगर के निवासियों को सुपुर्द की गई हैं, जो टेक्नोलॉजी से युक्त हैं, आधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं। जीरो इमिशन होगा इससे। जैसा बताया गया कि अगले कुछ दिनों में 25 और बसें आ जाएंगी, तो अर्बन मोबिलिटी की दृष्टि से मैं मानता हूं कि एक बड़ी सौगात श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने श्रीनगर वासियों को उपलब्ध कराया है। The first fleet includes e-buses having a length of 9 meters and another fleet of 25, which is yet to be launched, includes e-buses having length of 12 meters. Equipped with all the world-class technologies, the e-buses are all set to bring a massive facelift to the public transport system in the Union Territory. पूरे शहर में जो है ये बसेस चलेंगी। लगभग 15 रूट्स हैं शहर में। कोशिश की है कि सारे मैक्सिमम एरियाज़ को कवर किया जाए। मॉडर्न बसेस हैं, ज़ीरो इमिशन, इनमें कोई शोर नहीं है, इनमें कोई पोल्यूशन नहीं है। इसी के साथ जो है अंदर कंफर्टेबल आई वुड से एसी, हीटिंग और कूलिंग उस सब के लिए है, और सेफ्टी के लिए प्रॉपर कैमरास हैं बस में। सो बस आपके सामने है। इनफैक्ट आप इसका पूरा एक टूर भी कर सकते हैं। सामने देयर आर डिजिटल बोर्ड्स भी डेस्टिनेशन दिखाने के लिए, कहाँ से कहाँ बस जानी है। रूट नंबरिंग भी की गई है। सो हम लोग इंशाल्लाह एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि वंस दिस बसेस स्टार्ट फ्लाइंग तो लोगों को बहुत सुविधा होगी। तो क्योंकि आमद रफ्त का जो ज़रिया होता है, ट्रांसपोर्ट का तो ज़रिया होता है, ये शहर की रगें होती हैं। तो शहर की रगों में लोगों को इंश्योर करना, इकोनॉमिक्स को इंश्योर करने के लिए बेहद ज़रूरी है। A robust public transport system in the city will not only increase the comfort for commuters but also help bring down traffic congestion in the major city of the Union Territory. A special emphasis is also being laid to make the city carbon neutral. In last 5 years, be it road infrastructure, facelifting of tourist destinations
and now a robust public transport system, the government has been endeavoring to make Srinagar a perfect smart city of India. Moving on, roads and highways are considered to be the lifelines for any region. In a bid to develop the road infrastructure and connect hamlets and towns in the Rajouri district of the Union Territory of Jammu and Kashmir, the Border Road Organization is constructing tunnels and developing road infrastructure on Akhnur-Rajouri-Poonch highway. The development will not only help in reducing the commute time for residents, but also provide boost to business and tourism industry in the region. We have a report. The roads are the symbols of development, prosperity and growth. In the Rajouri district of Jammu and Kashmir, Border Road Organization is constructing tunnels and roads to decrease the commute distance by around 30 kilometers on Akhnur-Poonch highway. Constant efforts are being made to connect each and every village of the Union Territory with the towns and city centers. अब आप देखेंगे हर गांव में एक शहर है, हर गांव के चौक चौराहे में एक शहर है और जिस तरह से ये हाईवे जा रहा है ये एक जम्मू व कश्मीर के बड़े क्षेत्र को विशेषकर पीर पंचार, राजौरी, पुंछ और अखनूर और ये कालीदार का जो क्षेत्र था इसमें एक तो लोगों का तेल बचेगा, दूसरा समय बचेगा और तीसरा ये जो हाईवे निकल गया इसके कारण लोगों की जो जमीन थी, जो इस पे कभी झाड़ियां उगती थी, अब वहां पे बड़े बड़े कम्प्लेक्स खुलेंगे, मॉल खुलेंगे। जो सामान हमारे लोग पंजाब से, दिल्ली से, लुधियाना से, फैक्ट्रियों से मंगाते थे, उम्मीद है कि बहुत जल्द वो फैक्ट्रियां यहाँ लगेंगी और इस हाईवे का लोगों को तत्कालीन लाभ मिलेगा। The road infrastructure development is being done at a war footing. Residents say the road development will immensely benefit them in their commercial activities. The residents seemed elated with the pace at which the development is happening in the Union Territory of Jammu and Kashmir. रोडों का जाल बिछा दिया जनाब। आज कोई गांव नहीं जिसको रोड से लिंक नहीं किया गया और रोड ही हमारी तरक्की है। जब कम्युनिकेशन हमारा दूर तक होगा पूरे हिंदुस्तान में तो हमें इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। जहां तक इन रोडों का ताल्लुक है और जिस स्पीड से इस रोड को तैयार किया जा रहा है, 1 साल हुआ है, यहाँ लुक वगैरह डालना भी शुरू कर दी है इन्होंने और जहां जहां भी जरूरत थी वहां वहां इस रोड को चौड़ा कर दिया गया है और जब बनने के बाद आज हम ये देख रहे हैं, बनने के बाद तो हम सोचेंगे कि हम किसी फॉरेन कंट्री में हैं। The tunnels and roads that are being constructed in the border district are essential from the security point of view also. During extreme weather, these tunnels could become the only routes of mobilization for the army vehicles and the normal commute. The development of good roads and highways will also boost the tourism industry in the region. इस सड़क के बनने से यहाँ के लोगों के लिए कॉमर्शियल एक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगा। अभी फ़िलहाल जो सड़क के बनने से एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल रहा है, उसके अलावा एक बार सड़क बन जाती है तो इसका कॉमर्स जो है, क्योंकि स्पीड ऑफ मूवमेंट बढ़ जाएगा तो इससे कॉमर्स में बहुत फ़र्क पड़ेगा। यहाँ के ट्रेड एंड कॉमर्स आएगा, साथ ही साथ टूरिज़्म भी आएगा। ये जगह बहुत ही उम्दा जगह है और इतनी अच्छी सड़क होने से यहाँ के टूरिज़्म में बहुत बढ़ावा मिलेगा इसको। There are multiple benefits of improving the road infrastructure in the region. For the general public, the project is nothing less than a boon. The construction work is slated to finish by the end of February.
The residents expect a double growth in terms of commerce, tourism and other fronts after its completion. Moving on, the Jammu and Kashmir Tourism Department organized an enthralling music festival at Lal Chowk to commemorate the 5th UT Foundation Day in Srinagar. It was for the first time Tourism Department celebrated the occasion right at the heart of the Union Territory. 31st October is also commemorated and celebrated as the Unity Day in the country. Let's take a look. The iconic Lal Chowk at the heart of the Srinagar city adorned a mesmerizing look as the Jammu and Kashmir celebrated its 5th UT Foundation Day on 31st of October. Also celebrated as the Unity Day all across the nation, the day holds a special significance for the people of Jammu and Kashmir. With the dilution of Article 370 in the year 2019, the Jammu and Kashmir became a union territory of India, opening a road to development, growth, peace and prosperity for the people of Jammu and Kashmir. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है जम्मू कश्मीर की तरफ से, क्योंकि पिछले 30 साल में जो जम्मू कश्मीर की सिचुएशन थी, आज पिछले 5 साल से अगर हम देखें तो चेंज बहुत ज़्यादा हुई है, ऑन द ग्राउंड डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हुई है। और टूरिज़्म की अगर बात करें तो नेशनल इंटरनेशनल टूरिज़्म जम्मू कश्मीर काफ़ी आ रहे हैं। इस साल का भी अगर हम डेटा देखें तो 1.5 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट अभी तक कश्मीर वैली आ चुके हैं। सो एक बहुत ही पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग रूटेड मैसेज है कश्मीर की तरफ से कि एक पीसफुल जगह है जहाँ सारे लोग आ सकते हैं, चाहे वो नेशनल या इंटरनेशनल टूरिज़्म के रिलेटेड हों। A series of events were organized as a part of Jammu and Kashmir Union Territory Foundation Day at Lal Chowk and various other locations. The enthusiastic locals, tourists and people from all walks of life gathered at newly refurbished Ghantaghar to indulge in the musical renditions presented by renowned artists from Kashmir. आज का जो ये दिन 31 अक्टूबर पूरे जम्मू कश्मीर में ये यूटी फाउंडेशन डे मनाया गया है। अगर हम बात करेंगे पहली बार यहाँ पर जो कश्मीर में जो तवारीखी घंटाघर में ये पहली बार यहाँ पर एक टूरिज़्म डिपार्टमेंट वालों ने एक प्रोग्राम रखा है यूटी फाउंडेशन डे के मौके पर। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने लोग आ रहे हैं और इसमें प्रोग्राम को देखने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि 2019 से बहुत सारे डेवलपमेंट्स आ गई यहाँ पर। अगर हम बात करेंगे बहुत सारे ऐसे स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ पर घंटाघर बनवाया गया है, इसको रेनोवेट किया गया और पोलो ग्राउंड मार्केट भी बनवाया गया और भी बहुत सारे ऐसे स्कीम जो एलजी साहब ने इन 4 सालों में उन्होंने हमारे लिए हम लॉन्च किया है यहाँ पर। जो यहाँ के यूथ्स के लिए बहुत सारे ऐसे नौजवान जो बेरोजगार थे उनके लिए उन्होंने कुछ लोन्स उन्होंने प्रोवाइड, कुछ स्कीम्स उन्होंने प्रोवाइड किए ताकि वो उसका लाभ उठाए। The locals hailed the efforts of the government in bringing a sea change of growth and development in Kashmir Valley. जो लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है यूटी के में आप देख रहे हैं, काफ़ी हमारे यहाँ पे जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, अब पूरे महीने चलते हैं। जबकि जब हम लोग स्कूल में थे 90s में तो हमें तो ये लगता था कि महीने में किसी दिन स्कूल खुलेगा कि नहीं खुलेगा, लेकिन पिछले 4 साल में अगर आप कोविड को पीरियड छोड़ के आप देखें तो मुझे लगता है सैटरडे या संडे छोड़ के हर दिन स्कूल्स खुलते हैं, कॉलेजेस खुलते हैं। हमारा यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर भी है और घंटाघर जहाँ आप एक ज़माने में पथराव होता था, प्रोटेस्ट होता, वो सारा ख़त्म हो गया है। और आज यहाँ पे हम एक कल्चरल प्रोग्राम मना रहे हैं, म्यूजिकल फेस्ट मना रहे हैं, एक दिखा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन है, पीस है। The celebrations of the UT Foundation Day were seen all across the Union Territory.
At Sher-e-Kashmir International Convention Center, a program was organized to showcase the improvements and developments Kashmir has witnessed in the last 5 years. A sense of nationalism and unity was visible all across the Union Territory of Jammu and Kashmir as people celebrated the 5th UT Foundation Day. India, land of diverse cultures and rich history, has been home to numerous legendary freedom fighters and leaders who have dedicated their lives to the nation's welfare. One such iconic figure is Sardar Vallabhbhai Patel, often referred to as the Iron Man of India. Today, we bring you a special feature on the celebrations of the National Unity Day dedicated to this statesman who played a pivotal role in uniting the nation. जो काम हमें करना है वो काम हम करें तो सारी दुनिया में हिंदुस्तान जो अपना योग्य स्थान है वो ले सकता है. India is often considered the homeland of many renowned freedom fighters and distinctive figures who dedicated their entire lives to the welfare of the country. Sardar Vallabhbhai Patel, also known as the Iron Man of India, is one such legend of the nation who worked all his life to unite people and for the union of India. Sardar Patel is considered a driving force behind building of the nation as he took on the arduous task of integrating India in 1947, which was then divided into small princely states. His statesmanship and bitful diplomatic abilities proved crucial in persuading princely states to become part of India. To pay tribute to his contribution to the freedom movement of India and towards uniting states to form one nation, the country recently celebrated National Unity Day on the 31st of October in remembrance of Sardar Vallabhbhai Patel. जब हम देश में एकता का ये प्रवाह देखते हैं, जब 140 करोड़ भारतीयों में एकजुटता के ये भाव देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे सरदार साहब के आदर्श ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प बनकर हमारे भीतर दौड़ रहे हैं. मैं इस पावन अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में नमन करता हूं. The birth anniversary of Sardar Patel, National Unity Day, was celebrated with great fervor and enthusiasm across the country. On the occasion, a number of programs were held at the Statue of Unity in Gujarat, followed by tableaus from different states showcasing the cultural diversity of the nation. During the event, daredevil stunts by the women contingent of the Central Reserve Police Force, CRPF, symbolizing women's empowerment, were also demonstrated, as Sardar Patel is considered the founder of the CRPF. उन्होंने हमें एकता के लिए हमेशा प्रेरणा दी है. एकता में रहना चाहिए, यूनिटी में रहना चाहिए. सबसे स्पेशल बात है कि हम भारतीयों को यूनिटी में रहना चाहिए. और हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो भी, उन्होंने भी हमें बहुत ज़्यादा मतलब प्रेरणा दी है एकता में रहने के लिए. Various events and programs were also organized at the district and state level as different states organized Run for Unity, a marathon to showcase India's ancient value system of unity in diversity. People from all walks of life, regardless of their cultural, regional and religious disparities, together participated in the Unity Run to show the world that India is one and united. इस यूनिटी डे के लिए आज एनसीसी ने एक इनिशिएटिव लिया जिसके अंदर हम इसको यूनिटी रन बोल रहे हैं. और ये ना केवल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बल्कि ऑल ओवर इंडिया में ये यूनिटी रन आज एनसीसी के अंडर
ऑर्गेनाइज किया गया। इसका मेन मकसद है एकजुट यूनिटी, जो देश की यूनिटी उसको एक साथ करने का, और हमारे यहाँ भोपाल के यूनिट ने वो चीज़ एक आगे कदम बढ़ाया है इसको पूरा करने के लिए। मुझे अच्छा है कि मैं इस चीज़ का हिस्सा हूँ, ये जो यूनिटी राष्ट्रीय एकता दिवस की है उसके लिए। India will always be indebted to the contribution made by personalities like Sardar Vallabhbhai Patel in shaping the nation. All his life he worked towards uniting the people and bringing them together under his ideology of unity in diversity. Even today, his principles continue to guide the younger generation. That's all we have for you in this week's episode. Goodbye and take care.